Good morning, student. Today in this session and in this chapter, we are going to study about the theorem 10.6 and some basic concept related to this theorem. Let's start the content. The content is equal chords and their distance from the centers. So student, let AB be a line and P be a point. Since there are infinite numbers of the points on a line, if you join these points to P, you will get infinitely many line segments like PL1, PL2, PM, PL3, PL4, etc. Out of these line segments, the perpendicular from P to AB, namely PM in the figure, will be the least. In mathematics, we define this least length PM to be the distance of AB from P. So generally we can define it, the length of the perpendicular from a point to a line is the distance of the line from the points. Means जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन ए बी ड्रा किया, उस पर डिफरेंट पॉइंट्स L1, L2, M, L3, L4, L5 लिया और कोई एक पॉइंट हमने P लिया, वहां से इसके डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स हमने किया PL1, PL2, PM, PL3, PL4, PL5 एंड दीज एक्सेप्ट्रा, बहुत सारे लाइन सेगमेंट इस पे बन सकते हैं. तो इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो कौन सा होगा, जहां पर P से इस लाइन सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, वो लाइन सेगमेंट इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, लीस्ट डिस्टेंस. दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू दिस सेगमेंट. ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू study the theorem 10.6. Let's see the theorem 10.6. So the theorem 10.6 is equal chords of the circle or the congruent circle are equidistant from the centers. मतलब कि अगर यहाँ पर इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, जो ये कार्ड है AB और कार्ड BC, ये सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है. ये हमको प्रूव करना. अगर ये इक्वल कार्ड्स हैं तो ये सेंटर से क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे. इसके प्रूफ के लिए हमने क्या किया, यहां से A से O पर एक कंस्ट्रक्शन किया है और C से O तक हमने इसको ज्वाइन कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रा किया इस पर, क्या, OX एंड OY. तो अब हमको शो क्या करना है कि दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस. अगर इसको हम शो कर दिए तो हमारा ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाएगा. फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम लेट्स सी द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो गिवन पार्ट्स है पहले उसको नोट कर लेते हैं. जैसे गिवन दैट अ सर्कल whose center is O and AB and DC are two equal कार्ड्स, ये गिवन है. तो हमको एंड OX and OY are the perpendiculars on
AB and BC respectively. ये गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव OX is equal to OY. For the proof of this, we construct something in this. Join point A and O. Also join point O and C. Then the proof is taking triangle OXA and triangle OYC. In this triangle, OA is equal to OC. Why? Radii of सर्कल. ये सर्कल्स के क्या है? रेडियाई है. and AX angle is equal to OXC. A is equal to angle ये क्यों? OYC. क्योंकि that is equal to given है. AB is equal to we can say that Y is equal to CD. Then we can say that AB upon 2 is equal to CD upon congruence rule, right? AB upon 2 is equal to AX rule and CD upon 2 is equal to OXY is congruent to triangle OYC. Line segment congruent किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए. OX is equal to कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. मतलब ये और ये तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें यही प्रूव करना था कि जो सर्टेन डिस्टेंस है AX BX और Y का होगा वो और CY अगर दोनों कार्ड के इक्वल होगा. अगर AB is equal to हम कह सकते हैं तो AX is equal to BX is equal to CY is equal to equal cards. By this we can say that AX is equal to C cards of. तो यहां से हमको ये मिल गया of a circle. तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज two circles of the radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points. The distance between their centers is 4 centimeter. So find the length of the common equal distance पर होंगे. तो स्टूडेंट here given that, so we can say that अगर हम मान लें यहाँ से let radius, तो note down the statement of this C1 circle and proof of हमने इस वाले सर्कल को क्या माना? C1 और इस वाले सर्कल को which is based on this theorem. B example number R1 first and radius of C2 circle B R2. तो given that, तो यहां से हम लिख सकते हैं then R1 is equal to 5 centimeter and R2 is equal to 3 centimeter. And also given that what? Their centers, distance between their centers is 4 centimeter. Means O से X के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 centimeter. Means OX is equal to 4 centimeter. ये इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं. Let OR is equal to X. OR is equal to X centimeter. Then XR is equal to OX minus OR. Means 4 minus X ये हो जाएगा. Right? So student, we take two triangles. First triangle
पी आर ओ। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल पी आर ओ है यहाँ पर ये क्या करेगा, 90 डिग्री पर इसको बाइसेक्ट करता है। जैसा कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले लेक्चर के वीडियोज में कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड हमने सॉल्व कराया। तो ये जो सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, जो ये लाइन सेगमेंट है ओ एक्स, ये कॉमन कार्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मीन्स ये और ये दोनों इक्वल होते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होता है। तो ट्राइंगल पी आर ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाई Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we can say that what, OP is the hypotenuse, so OP square is equal to PR square plus OR square. This implies that OP is equal to 5 centimeter. So square of 5 is equal to 25 centimeter square, that is equal to PR square plus OR square is equal to X square. This implies that PR square is equal to X minus 25 centimeter square. That is the equation number first. Next, we take triangle PRX and apply Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. So we get what? Px square is equal to PR square plus RX square. Px square means the radius of the C2 means R2, that is equal to 3 centimeter, and square of 3 centimeter is equal to 9 centimeter square, that is equal to PR square plus RX means X minus 4 का square, that is equal to 9 centimeter square is equal to PR square plus square of X minus 4 is X square plus 16 minus 2 into 4X, that is equal to 9 centimeter square is equal to PR square plus X square plus 16 minus 8X. So after simplifying it, we get PR square is equal to X square minus X square and minus 7 plus 8X. That is the equation number second. From equation first and second, here is the X square, because X square transpose in this side, so PR square is equal to X square minus 25. So from equation first and second, from first and second we get what? X square minus 25 is equal to minus X square and also this is the positive and it is the negative, because it is transpose, then sign will be changed. So in this equation X square is the negative, so here is the also negative and it is the positive. So the equation is negative X square plus 25 is equal to negative X square minus 7 plus 8X. X square and X square will be cancelled because both are opposite sides and same terms.
So that is equal to 25 is equal to minus 7 plus 8x. This implies that 8x is equal to 32. And this implies that x is equal to 4. So यहां से हमने x की वैल्यू कितना लाया 4. तो x क्या है? x is the distance of OR. x is the distance of OR. So what is the x? x is the distance of OR. यहां से यहां तक किसका डिस्टेंस है? हमने OR निकाल लिया. So Rx क्या हो जाएगा? Rx is equal to Ox minus OR. This implies that Ox is equal to Ox is equal to 4 centimeter and OR x is equal to 4. Now this is equal to 4. We want to find that PR. So PR is equal to 25 minus 16, that is equal to 9. Why? Because PR square is equal to OP square minus OR square, that is equal to 9 centimeter. This implies that PR is equal to PR square is equal to 9 centimeter, then PR is equal to 3 centimeter, right? So PQ is equal to 2 into PR. This implies that 2 into 3 centimeter is equal to 6 centimeter. So the length of the common chord is equal to, so the length of common chord PQ is equal to 6 centimeter is the answer of this question. So student, on the basis of this question and the theorem, I have given a question for you in the classwork to try to solve, and if you have any problem, so you consult me and contact me. Let's see the problem of the classwork. So the problem of the classwork is, first, two circles whose radii is 7 centimeter, 5 centimeter intersect at points and the distance between the center is 6 centimeter. Find the length of the common chord. And second question is, two equal chords AB and CD of the circle with center O, when produced, meet at a point E. As shown in the figure, prove that BE is equal to D and AE is equal to C. So let's try to solve it, and if you have any problem, so you contact me. Thank you so much. And